So in today's class, we will be continuing from where we left yesterday. Yesterday, we discussed few things about the NLP, and the major reason about NLP discussion was because the syllabus says that we have to work around NLP. If you look into the detailed syllabus, then also you will find that there are 2-3 units which are having natural language processing in it, and mainly we have to work around this problem in data science. So I'm focusing more on NLP in the starting lectures. Especially in today lecture also, I will be discussing a bit about NLP extended version of yesterday lecture. So yesterday we saw the introduction to NLP definition, and then we discussed the analytics. So what are the different things that are available for us? What kind of operations we can do on the corpus? We discussed that. Then we discussed the advantages of probability, that how it can help. I gave few examples. Then we also discussed that how this machine translation came up in 1947. This Warren Weaver person said this statement, this is really written in English. After reading Russian article, he said this statement that it has been coded into some strange symbols, and I will now proceed to decode. So we discussed also this triangle in yesterday's class, and then we discussed that how we can do machine translation using 2-3 different versions. So one version was word to word translation, which was this example based machine translation. Then we discussed the statistical machine learning, in which we would say that we will be using machine learning models to get the work done based on phrase based translation and like that. I mean, the third approach was neural machine translation, in which I said that we would be using some embeddings and we will be using the artificial neural network to get the job done. So we discussed the last example in the last in the yesterday's class. This was the last example that given some different number of statements or different articles, we want to generate some hypothesis which is not directly written in the document, but still we want to get something out of it. So I gave you this example that this Dr. Swanson, who was an information scientist, he had these different statements related to stress, and he came up with the statement that magnesium deficiency could lead to migraine, which was not directly written here. And this thing is coming under hypothesis generation. And then we ended the lecture on this summary slide. Now, in today's lecture, I will be discussing few, uh, statistical part of NLP, that how we can work around probability and different statistics of it, maybe the word frequency and all those things, and then get the job done. So I have few slides on NLP, and then I will be discussing the machine learning also, because in the unit we have to discuss supervised and unsupervised methods for NLP. So you might you might find few, one or two, maybe 3 slides which are similar to the previous machine learning subject, but they are necessary because we will be discussing it from the NLP point of view. So the major goal of NLP is that we have the ability to process and harness the information from a large corpus with a very little human intervention. So the major thing that we need to focus here is that we have to have very little human intervention. We don't need, I mean, काम ऐसा हो जाए that we do not need human intervention. Automatically machine is able to get the job done on the NLP part. Then only we would say that we have done our NLP job in a good way, good manner. So if you look at these examples, every example has different, it is easy for human being, but think it from the machine point of view. So the term, if we do the NLP part, the terms which are written in the first sentence, what is added with 15 to get 45? This is a maximum class 4 example, maybe class 3 example. It's a subtraction question, but because of the words written in it, if we use the NLP technique based on the word formation, and then we make the meanings out of it, it will be very difficult for machine to get the job done, that we have to subtract 15 out of 45 to get the answer 30, because 30 plus 15 will be 45. So it is not directly written here. The second point is juvenile court to try shooting defendant. So because we know that court has something to hear, like they have to hear a case for a juvenile person. So that is kind of I mean, the meaning of the statement is not directly there.
maybe someone is juvenile and he has shooted somebody, so that's why uh, this kind of statement is written. Then even if we read the last statement, local high school dropouts cut in half, because we know that we have read surveys and we have heard the news multiple times that uh, many times admissions get cut off, right? So many people drop out from one school to the other. So that's why this kind of statements are not directly understandable for a machine, and there is also part of sarcasm which can come. I have one example in the coming slides around that, but there are multiple challenges that we have to face to get the job done around NLP. So moving ahead, now there are multiple things we have written here. Why the NLP is difficult? Because there are first of all, there are multiple ways to say the same thing, right? Saying the same sentence can have maybe 5 different types of statements, and then include common sense and contextual representation. So few things which are common sense to us, and which may have even visual cues for us. Maybe we have seen a movie and we can correlate to it. Just by saying it without having some visual cues, it is very difficult for NLP statement to be understood sometimes in few of the cases. So there is sometimes based on vocabulary. Let's say if we are reading the Hindu newspaper, obviously we might need to have a dictionary with us compared to reading a Tribune. So vocabulary also matters. While reading a article, we sometimes find few words hard, few are simple words. So those kind of things are also one of the challenge in NLP. Ambiguous in nature, so some statements can be ambiguous, meaning can be different. Sarcasm, idioms, metaphors which are not directly which are not directly understandable. For example, to is human has a Hindi translation of आदमी गलतियों का पुतला है. So if you directly convert this आदमी गलतियों का पुतला है, you will not reach to a is human, right? So those kind of idioms need to be understood, and those kind of things have to be clearly mentioned in our dictionary, in our corpus. So human language interpretation depends on real world common sense and contextual knowledge. So all these kind of things are different challenges which makes NLP problem difficult to be understood. And because I said, because of the multiple challenges, we have to understand the sarcasm also, idioms also, all different examples have to be heard. So those kind of things we need to take care. So for that, we need a very large corpus. And what are the different ideal properties of the corpus? First point is collection of written text in a digital form. First of all, when I'm talking to you, I'm not using proper grammar, and the way we speak is not grammatically, not always grammatically 100% correct, right? The speaking language versus the grammatical language are two different things. So we, whatever we are speaking, it should be in the it should be written in the digital form. This is one of the challenge to have a corpus. So if you have it, it's a good thing. Useful to verify a hypothesis about a language. To So let's read this statement. The boy play cricket on the river bank. So here we are saying that around the river, near the river bank, the boy is playing the cricket. The second statement is the boy plays cricket by the side of the national bank. So this was the bank word used for the river bank. This one is used for the normal banks that we go to the market. So same word is having two different meanings. So to determine how the usage of a particular sound, word, or syntactic construction varies in different context. So we need to have this kind of understanding. हमारे कॉर्पस में ये चीज का मल्टीपल एग्जांपल होना चाहिए टू अंडरस्टैंड दैट इवन दिस बैंक हैज टू डिफरेंट मीनिंग्स. जैसे इन द यस्टरडेज लेक्चर आई गेव वन एग्जांपल दैट इन हिंदी वर्ड कल, के कल जाना है या कल गए थे, only depending on the kal word we cannot determine if it is for the yesterday or tomorrow. But when we link it with the words around that, kal jana hai ya kal gaye the, wahan se हमें पता चलता है that we are talking about yesterday or the tomorrow part, right? So then it contains most of the words of a language. So maximum cases में मतलब
आइडियली कॉर्पस हमारा बहुत बड़ा होता है, सो वी हैव मोस्ट ऑफ द वर्ड्स ऑफ द लैंग्वेज, उसमें मतलब मे बी इट इज इन बिलियंस, उसकी लेंथ बहुत बड़ी है. In fact, it is one of the point here also that it is huge. It might have several billions of words. So changes as a function of time. So uh, many times what happens is every year in our dictionary, also in the Oxford dictionary, few words are added over time. So for example, uh, in South India, Ayo word is used a lot. So recently I have read somewhere that Oxford dictionary has added the word Ayo in the English dictionary, Oxford dictionary. So it changes over time, right? So ये भी हमें पता होना चाहिए that our corpus should get updated. Even distribution of text from all domains of language use represent all areas of coverage of the text of a language and access of language data. So ये सारे points हैं which we need to take care when we sometimes there might be a case that let's say that you are doing a job in future and in your organization you have been told that you should generate a corpus. Then you have to think from all these perspectives that मुझे हर तरह का example लेना है, and we should have a very huge corpus. We should include all kinds of examples, even the idioms, the sarcasms. So everything should be included so that we can say that yes, my corpus is complete in nature. So there are multiple examples here. Just by this slide, I will help you even getting the ideas of your capstones. For example, let's discuss the third point, language generation. So दिखने में बोरिंग सा लग रहा है, लैंग्वेज जनरेशन क्या होगा, डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन ए फोटोग्राफ, टाइटल फॉर ए फोटोग्राफ, बट दिस इज ए कैप्शन प्रोजेक्ट इन इटसेल्फ. सो डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन फोटोग्राफ का मतलब है कि आप एक तरह का एक फोटोग्राफ को देख के उसको डिस्क्राइब कर रहे हो. इट माइट बी यूज फॉर इमेज कैप्शनिंग पर्पस. सो इमेज कैप्शनिंग अगर आपने करना है प्रोजेक्ट, सो इमेज कैप्शनिंग कम्स अंडर दिस थिंग दैट यू हैव टू visualize, you have to understand the photograph and then generate the language around it. So you have to you have to generate the caption around it, and caption might be in form of a sentence, it might be in form of these hashtags. So multiple hashtags भी generation भी कर सकते हो. In fact, these kind of things are already being used by Facebook and Instagram. So Facebook is using these things in our post whenever we upload. Even for YouTube videos, when we upload the YouTube video, generally, if we allow the system, they automatically start giving the suggestions that आप ये वाला भी hashtag include कर लो. You must have seen this thing in the LinkedIn post also. Whenever you post a very huge LinkedIn post, the hashtags are auto suggested. So these kind of things are language generation task, right? Then image, let's talk about this information retrieval. So find documents based on keywords. ये तो बहुत normal सी बात है कि आप documents search करना चाहते हो. For example, I have 20 PDFs in my folder, and I want to find those PDFs जिसमें फेस रिकॉग्निशन वर्ड लिखा हुआ है. तो अगर आप नॉर्मल अपना विंडोज में खोलोगे उसको, उस फोल्डर को, और आप ऊपर फाइंड वाला लिखोगे फेस रिकॉग्निशन. सो आई हैव ट्राइड इट पर्सनली. सो मैं बता सकता हूँ कि अगर मैं वहाँ फेस रिकॉग्निशन लिखूंगा तो बेस्ड ऑन माई कीवर्ड द डॉक्यूमेंट्स गेट फिल्टर्ड आउट ऑटोमेटिकली. विंडोज में वो वाला फीचर ऑटोमेटिकली है, बट इफ यू वांट टू बिल्ड इट on your end, this is a very good challenge again, right? So based on the keyword you want to find a document. Then information extraction, identify and extract the personal name, data, company name, city. So all these kind of things, obviously आप सबने database थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, and in database we have already seen these kind of challenges कि हमें कुछ भी extract करवाना है based on name, date. All these kind of things can be easily extracted out of the data set. Then text clustering, automatic grouping of documents. So this is also one of the very good topic that based on some PDFs, now you have a challenge that मुझे उसके theme के basis पे उनकी grouping करनी है, right? And even this is true for spam and non-spam. तो spam non-spam तो फिर कहीं ना कहीं आसान है क्योंकि आपने वहाँ पे सिर्फ दो ही classes के साथ handle करना है उसको, दो ही classes में हर चीज को बांटना है 0 और 1. But for example, you have multiple documents having maybe 10 different classes of data. तो आपको
हो सकता है कि आपको 2000 पीडीएफ दे दिए गए हैं और आपको बोला है कि यार आप ना इसको 10-15 डिफरेंट क्लासेस में बांट दो एंड शिफ्ट ऑल दीज पीडीएफ्स इनटू दोज फोल्डर्स। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको ये करना पड़ जाए, इट विल बी वेरी चैलेंजिंग टास्क। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ ए वेरी गुड प्रोजेक्ट इफ यू वांट टू वर्क अराउंड इट। सो इफ यू want to, let's say, take 100 PDFs out of those 2000 and put them in one of the folder called face recognition. Maybe second folder might be around the image captioning. Third statement might be around the YOLO or all those kind of deep learning techniques. Multiple things can be done. So for the text classification also, let's say that we are doing this assigning the predefined categorization of documents. So we can do this kind of text classification also if we are giving a label to that document. So labeling and clustering is somewhat, I mean, very near when we do them practically, but still they are two different things. So machine translation we have already discussed yesterday. The last point is grammar checkers. So check the grammar of any language. So if you want to check grammar around the document, for example, you must have heard about Grammarly. There are multiple advertisements coming up these days for Grammarly. So Grammarly is very helpful in checking the grammar of my paragraph or my document. Let's say that you want to generate a report, so Grammarly comes with that all the features that they can check for the passive voice or all the grammatical mistakes. Even Grammarly has that multiple features are there, so I will not go into the details of it. But then again, that is one of the NLP tasks only, that you are generating a grammar checker. It's a very good project if you want to build. So there are different applications. I mean, all those kind of things have been written here. So you can work around sentiment analysis problems, search engines, content or news creation, automatic machine translation. All these kind of things you can build around the NLP. And I hope everyone has some understanding about these uh, points. So I will not go into these details of applications. Let's come to the last slide of NLP. Then I will come to, I think, machine learning. Yeah, machine learning will start. So this is lexical resource. So there are multiple examples. Just a second, I have got one message. So for machine to understand the context of sentence like river bank or national bank, shouldn't it check verbs, nouns, vowels? So yes, there are multiple techniques. So it should check all those things, and it has to work on bigrams and trigrams. So all those kind of checks will be there. And from that point of view, we should have all kinds of examples in our data set. If the words are not available, if the examples are not available enough, then our machine might underfit. So that's underfitting problem, that you are not giving enough data and then you are trying to classify it into all, I mean, let's say there are only two classes, so everything will be converted into those two classes only. It will be classified into those two classes. So we should have variety of things. In these kind of challenges, we need to have multiple classes. We need to have a very big data set so that we can handle those kind of problems easily. So there are these examples, they are written in front of you. So these are the data sets that are very famous. Brown corpus is one of the data set which contains American English. So this statement on the left, it is written that corpus is a collection of machine readable text collected according to certain criteria. So this certain criteria is this American English. For example, we are getting the job done around the American English. So that's the certain criteria in this statement. Then representative collection of text. So there are multiple collections. So for example, in this, Suzanne is a subset of Brown but is freely available. So this is one of the example written here. And representative collection of text ho gaya. Then used for statistical analysis and hypothesis testing. So all these kind of things, because let's say this is one of the dataset Brown corpus, and then there is this one corpus of Canadian Hansards. यहाँ पे French and English ट्रांसक्रिप्ट अवेलेबल है, जो भी उनका पार्लियामेंट का है. सो जनरली वी ऑल नो दैट इन कनाडा फ्रेंच एंड इंग्लिश आर द टू languages that are widely used even in the parliament. All the government documents come in two languages in Canada, French and English. So from that point of view, this data set can be very helpful if someone want to work on English and French. So those transcripts are available. And then Pen Tree Bank, this is one of the data set.
It contains annotated text from the Wall Street Journal. अगर stock market के around कुछ काम करना, this can be checked out. So most NLP software platforms, this natural language toolkit and Spacey, all these kind of libraries have several corpus inbuilt. पहले से पढ़े हैं वहाँ पे, आप उनके ऊपर भी काम कर सकते हो. So there are multiple lexical resources, and all these kind of things can be very helpful for us to build something. So these operations have already been discussed in yesterday's class, so I will not go into the detail of it. But then again, you should know that these kind of operations can be done specifically on text. Yesterday, I told that multiple operations can be done on the corpus, but not specifically on the text. So these are the particular things that we can do on the corpus of text. Now I will come to the machine learning and its types. So we need to discuss these things also. Just a second. So machine learning क्या होता है? Can anyone tell? Because you have studied in previous semester, I will quickly cover these things. So what is machine learning? Can anyone tell me the definition? Quickly. Basically, so these are the algorithms which can be improved by the experience. Yes, algorithms improved by experience. ठीक है. और इसमें तीन चीजें होती हैं: परफॉर्मेंस, एक्सपीरियंस एंड टास्क. टास्क दिया गया है, उसके ऊपर परफॉर्मेंस अगर इंप्रूव हो रही है ओवर टाइम, Yes, sir. तो वो हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे इंप्रूव होना चाहिए, उसको हम मशीन लर्निंग कहते हैं. एंड द डेफिनेशन, जो फॉर्मल डेफिनेशन है, वो ये भी है, बाय गिवन बाय टॉम मिशेल. इट्स ए वेरी फेमस डेफिनेशन. इन्होंने बुक भी लिखी है मशीन लर्निंग पे. सो दिस डेफिनेशन सेज दैट मशीन लर्निंग, when defined as a well posed learning problem, it is a computer program which has experience, which learns from the experience E with respect to some task T and some performance measure P, and over time वो performance उसका improve होता है. ठीक है. By doing the task again and again with experience, वो improve होता है. तो this statement is the definition of machine learning. Then if we go into the details of the examples, for example, आप housing price prediction करना चाहते हो, so उसमें experience क्या होगा? Experience होगा कि आप उस डेटा सेट का नंबर ऑफ रूम्स, एरियाज, नंबर ऑफ फ्लोर्स, क्राइम रेट उस एरिया का. तो जितना ज्यादा हमारे पास एग्जांपल्स होंगे रो वाइज, दैट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर अस टू अंडरस्टैंड और मेक द इक्वेशन आउट ऑफ इट कि हमारा हाउसिंग प्राइस का प्रेडिक्शन ठीक है. And similarly for the Bitcoin price predictor, which is actually a very hot topic these days. So if you are following stock market, especially the Bitcoin market, uh, this cryptocurrency market is very fluctuating these days. Bitcoin ne recently, it touched 55 lakh rupees per Bitcoin, and these days it is fluctuating around 34-35 lakh. तो बहुत ज़्यादा fluctuating है. All those kind of predictions can only be done if we have the previous year data set, right? And compared to Bitcoin market, to the cryptocurrency market, stock prices थोड़े से ज़्यादा reliably predict हो जाते हैं, because बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ऑल दीज थिंग्स केम अराउंड 1980s. ठीक है. तो इसके लिए हमारे पास 40 साल का डाटा सेट है. बट क्रिप्टो करेंसी का हमारे पास मैक्सिमम 10-12 ईयर्स का डाटा सेट है. तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, जितना ज़्यादा हमारे पास एग्जाम्पल्स होंगे, इट विल बी मोर इजी फॉर अस टू डू द प्रिडिक्शन. सो दैट वाज द मेजर thing that I wanted to discuss here. So again, if you want to do these kind of predictions also, if you want to do image segmentation क्या होता है? Can anyone tell me quickly what is segmentation? और अगर सेगमेंटेशन करना भी है, तो विच इज द बेस्ट एल्गोरिथम दीज डेज विच इज वेरी हेल्पफुल इन सेगमेंटेशन, इमेज सेगमेंटेशन में स्पेशली? हाँ जी, एनीवन? basically partitioning an image कंपोनेंट वर्ड्स में डिवाइड कर देना स्ट्रिंग को. किस में डिवाइड कर देना? मल्टीपल पार्ट्स में, components. कंपोनेंट्स, या. सो इमेज सेगमेंटेशन में क्या होता है? इमेज सेगमेंटेशन इज वेरी हेल्पफुल इन, इवन इन आर व्हाट वी से सेल्फ ड्राइविंग कार. उसमें क्या होता है? इमेज सेगमेंटेशन कहती है कि हमारे पास अगर एक इमेज आई, और उस इमेज में एक बंदा खड़ा है, एक सड़क जा रही है, और एक साइड पे ट्री है. ठीक है. तो मैंने ट्री ऐसे गंदा सा बना दिया, बट
अगर हम इस इमेज में इनको क्लासिफाई कर पाए कि इसका ये वाला एरिया है, इन दिस बॉक्स दिस इज ह्यूमन बीइंग, इन दिस बॉक्स दिस इज ए रोड, इन दिस बॉक्स इट इज ए ट्री, तो अगर हम ऐसे करके क्लासिफाई कर पाए, इनफैक्ट नॉट जस्ट क्लासिफाई, वी आर एक्चुअली एबल टू मेक दीज बाउंडिंग बॉक्सेस, इनको हम बाउंडिंग बॉक्स बोलते हैं. सो इफ वी आर एबल टू डू दीज काइंड ऑफ बाउंडिंग बॉक्सेस स्पेसिफिकली अराउंड दैट target object, it may be a human being, it may be a road, it may be a tree, it may be a building, तो कुछ भी करना है इसको हम सेगमेंटेशन प्रॉब्लम बोलते हैं. ठीक है. एंड सेगमेंटेशन प्रॉब्लम का बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बहुत अच्छे अच्छे इसके एग्जांपल्स हैं. इन सेल्फ ड्राइविंग कार आल्सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज व्हेन द कार इज मूविंग वी आर हैविंग लेट्स से 30 फ्रेम्स पर सेकंड और 60 फ्रेम्स पर सेकंड वीडियो जो हमारा रिकॉर्ड हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन हमारा कितना अच्छा कैमरा है. बेस्ड ऑन दैट 30 FPS 30 फ्रेम्स पर सेकंड का मतलब है कि आपके पास एक सेकंड में 30 इमेजेस आ रही हैं, और आपको उन इमेजेस के अंदर उस स्पीड पे ये वाला एल्गोरिथम लगाना है दैट यू आर एबल टू मेक दीज बाउंडिंग बॉक्सेस. तो कैन एनीवन गिव मी द एग्जांपल ऑफ द एल्गोरिथम व्हिच इज वेरी हाईली यूज्ड दीज डेज? इट इज वेरी फेमस. ये बॉक्सेस बनाने के लिए एक बहुत फेमस एल्गोरिथम है. कैन एनीवन टेल मी द नेम ऑफ इट? Sir, YOLO. Yes, YOLO. YOLO is you only look once. It is a very famous algorithm these days. Recently शायद उसका वर्जन 5 आ चुका है. तो वर्जन 3 वर्जन 4 तो इजीली अवेलेबल है. वर्जन 5 का आई एम नॉट श्योर इफ इट इज अवेलेबल इन पाइथन, बट इट इज अवेलेबल इन ओपनसीवी. तो इसके और भी वर्जन हैं योलो के. योलो इज वेरी गुड इन डूइंग दीज काइंड ऑफ सेगमेंटेशन प्रॉब्लम्स. तो वो भी बैक एंड पे मशीन लर्निंग ही हो रही है. ठीक है. योलो में डीप लर्निंग हो रहा है एक्चुअली बैक एंड पे, बट स्टिल इट इज वेरी हेल्पफुल फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू. इसका जितना मेरे को याद है डेंसनेट नाम का मॉडल है. एक डेंसनेट होता है या कुछ ऐसा होता है, ऐसा कुछ नाम है, डेंसनेट है शायद. डेंसनेट एल्गोरिथम इज बीइंग यूज्ड इन ऑन द बैक एंड ऑफ योलो. आई एम नॉट 100% श्योर, आप एक बार कंफर्म कर लेना. सो वहां पे भी यही सब हो रहा है कि आप ओवर टाइम जब मल्टीपल इमेजेस को सेगमेंट कर रहे हो यू आर एबल टू डू द क्लासिफिकेशन इन ए गुड मैनर. तो टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस विद लेबलिंग ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. तो अगर आपके पास डाटा सेट होगा कि ये ह्यूमन बीइंग दिखता कैसा है या फिर रोड दिखती कैसी है, देन यू आर एबल टू डू दीज काइंड ऑफ लेबलिंग्स को यूज करके आप मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग करवा सकते हो. सिमिलरली ओवर टाइम इफ यू वांट टू कन्वर्ट, लेट्स से आपके पास कुछ इमेज है, आपकी फोटो आपने खींची, उसको आपने कार्टूनिफाई करना है या इमोजीफाई करना है, स्पेशली कार्टूनिफाई करना है. इट इज ए वेरी गुड प्रॉब्लम दीज डेज अगेन. सो इफ समवन इज वर्किंग ऑन दिस प्रॉब्लम इट्स ए वेरी चैलेंजिंग एंड गुड प्रॉब्लम. तो इसमें डीप लर्निंग अच्छी खासी यूज हो जाएगी. आप किसी भी फेस को एनिमेट करना चाहते हो, कार्टूनिफाई करना चाहते हो, इट्स ए वेरी गुड प्रॉब्लम. तो अगेन machine learning will be very helpful for doing all these things. So moving ahead, so there are multiple types. We need to specifically discuss these two. These two are in our syllabus. Supervised, unsupervised, reinforcement learning. These are the three broad classes of machine learning. And the semi-supervised, self-supervised, multi-instance, we will not discuss this in detail. But these are the further examples of this supervised and unsupervised only. So some part of it is supervised, some part of it is unsupervised, used in a combination. It helps us in doing these semi and self-supervised learnings. So can anyone tell me that what is supervised learning and how is it different from unsupervised learning? We will focus on only these two for now. जल्दी बताओ. सुपरवाइज में आउटपुट लेबल्स हमें गिवन होते हैं पर अनसुपरवाइज में नहीं होते हैं. हाँ, तो सिंपलेस्ट डेफिनेशन यही है कि हमारे पास अगर लेबल गिवन है, सुपरवाइज का मतलब है कि अगर हमारे पास पहले से बैकएंड पे सॉल्यूशन पड़ा है, आंसर्स हैं हमारे पास, तो हम उसको सुपरवाइज बोलेंगे कि भाई तू कर, तू प्रिडिक्शन कर और साथ के साथ मैच करता जाके तूने सही करा है या गलत करा है. ठीक है. उससे उसको अपनी एक्यूरेसी पता चल जाएगी. बट अनसुपरवाइज में हमारे पास लेबल नहीं है और उसको हमें खुद ही जनरेट करना है. सो वी विल डिस्कस दीज प्रॉब्लम्स इन डिटेल नाउ. तो सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है? सुपरवाइज लर्निंग अकर्स व्हेन algorithm learns from example data and associated target responses. Target response हो गया हमारे पास जो लेबल पड़ा है. ठीक है. सो टारगेट रिस्पॉन्स इज द लेबल. तो हमारे पास सपोज कुछ एट्रीब्यूट्स पड़े हैं, उनको यूज करके आपको एक लेबल प्रेडिक्ट करना है. ठीक है. इट मे बी 0 और 1. तो 0 करो या 1 करो, बट आपको ये वाले पुराने कुछ एट्रीब्यूट यूज करने पड़ेंगे ये वाली सारी वैल्यू यूज करके. तो इसीलिए बोला गया कि आप कुछ आपके पास एग्जाम्पल डाटा होगा विच इज दिस साइड विच इज एक्स. ठीक है.
और इसके फंक्शन को अगर हम यूज करके फाइनल आउटपुट निकाल रहे हैं तो वो हमारा y है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। एंड द गोल इज टू अप्रोक्सीमेट द मैपिंग फंक्शन, यहाँ पे मैपिंग फंक्शन बनाना है सो दैट बेस्ड ऑन द इनपुट डाटा आपके पास आउटपुट लेबल आ जाए। Again, I will not go into the detail of it. You know all these things. So we will directly come to this two types of सुपरवाइज्ड लर्निंग, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन सिंपल है, अगर आप कोई टी शर्ट लेने जा रहे हो मार्केट में तो आप स्मॉल ले लोगे, मीडियम ले लोगे, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल, तो ये सब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। तो ये हमारी, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हम क्लियरली दुकानदार को बता सकते हैं कि भाई मेरे को इस टाइप की ही टी शर्ट दिखाओ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सुपरवाइज वाला, क्योंकि हमारे पास कैटेगरी बना हुआ है और कैटेगरी के बेसिस पे वो क्लासिफाई भी कर पा रहे हैं। तो ये सुपरवाइज्ड का क्लासिफिकेशन का एग्जांपल हो गया। एंड अगर रिग्रेशन करो, रिग्रेशन में अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कुछ एग्जैक्ट आपको क्लास नहीं पता, आप उसको ये नहीं बोल सकते कि मुझे इसमें से स्पेसिफिकली 1 2 3 4 5 ही देना है। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि सपोज समवन इज डूइंग स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, तो वहां पे हम क्या करेंगे कि अगर मेरा स्टॉक का प्राइस, जो मैं सपोज मुझे कुछ खरीदना है, लेट्स से आजकल जैसे मैं भी देख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आई वांट टू बाय बिटकॉइन, तो आई एम लुकिंग, मैं वहां पे कंडीशन दे सकता हूँ ऐप में कि अगर मेरा जो बिटकॉइन है उसका रेट बिलो 30 लाख आ जाए पर बिटकॉइन, तब मैं उसमें लेट्स से 50,000 इन्वेस्ट करने को रेडी हूँ, ठीक है। आई वांट टू टेक दैट डिसीजन बट ओनली इफ इट कम्स बिलो दिस। अब 30 लाख से नीचे का मतलब ये है कि वो 29 हो जाए, 28 हो जाए, सब कुछ भी मतलब इसमें से आ जाए, उसके लिए वो सब क्वालिफाई कर जाएगा। तो रिग्रेशन में एक एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है, एक एग्जैक्ट क्लास नहीं होती, इट इज ए रेंज, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बोली गई है। इन रिग्रेशन प्रॉब्लम्स द इनपुट वेरिएबल्स आर मैप्ड टू ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, वो कुछ रेंज में आ सकता है कि लेस देन 30 आ गया तो इट कैन बी 0 to 29.999, तो कुछ भी रेंज में आ जाए चलेगा, ठीक है। इसमें रेंज होती है, एक एग्जैक्ट नंबर नहीं होता। अगेन इन क्लासिफिकेशन आप ये चीज कर सकते हो, क्रेडिट स्कोरिंग। अगर किसी ने लोन लेना है तो लोन लेने के लिए इंडिया में सिबिल स्कोर चेक होता है, आई होप आप लोगों को ये पता हो, सुना होगा इसके बारे में। तो सिबिल स्कोर माइट रेंज 600 से लेके मे बी 850 एंड इवन 900 किसी का हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कभी लोन नहीं लिया, उसका मोस्ट प्रोबेबली 700 के आसपास होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी ने शॉपिंग शॉपिंग करी है, उसने क्रेडिट कार्ड उसके पास मिला हुआ है, उसने पेमेंट टाइम पे कर दी है, तो ये 700 का धीरे धीरे 800 हो जाता है, उसका 900 हो जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन आपने कितना लोन लिया है, कितना आपने काम किया है, तो वो सब चीजें होती हैं। तो वही चीज लिखी है यहाँ पे, दैट गिवन द इंफॉर्मेशन ऑफ कस्टमर का इनकम कितना है, उसकी सेविंग कितनी है, उसकी उम्र कितनी है जी, वो काम क्या करता है, तो ये सब चीजें क्रेडिट स्कोरिंग में काम आती हैं। क्लासिफिकेशन क्या करता है, क्लासिफिकेशन में तो सिंपल है कि अब ये दोनों चीजें इंटरलिंक्ड हैं, ये वाले दोनों एग्जांपल। So predict whether a new customer is at low risk or high risk versus the probability of customer is at a low risk or high risk। इसमें हमें probability बतानी है, ठीक है। probability means कि आप उसको 0.7 या 0.8 या 0.5 ऐसे कुछ करके नंबर दोगे, और वर्सेस यहाँ पे आपने सिर्फ ये बताना है 0 और 1, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी दे रहे हो या फिर आप एग्जैक्ट नंबर दे रहे हो 0 और 1 के फॉर्म में, दैट इज द मेन थिंग जहाँ पे हमें सुपरवाइज लर्निंग का काम करना है। सो दीज आर द मल्टीपल एग्जांपल्स। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ एनएलपी के बेसिस पे नहीं हर तरह के एग्जांपल उठाए हैं, बिकॉज आवर सब्जेक्ट इज डेटा साइंस, सो वी नीड टू फोकस ऑन ऑल दीज काइंड ऑफ problems. It can be any problem depending on that you might want to deal with that kind of data. तो आप किसी भी तरह का देख लो, यहाँ पे क्लासिफिकेशन में वी हैव मल्टीपल एग्जांपल्स। इफ यू वांट टू डू ईमेल क्लासिफिकेशन, कल एक स्टूडेंट बता रहा था कि उन्होंने काम किया हुआ है स्पैम नॉन स्पैम पे। Similarly, if someone wants to generate algorithm for सेंटिमेंट एनालिसिस, लेट्स से कोई वर्ल्ड कप अभी जैसे होके हटा है, इंडिया हारा है बुरी तरह, बट देन सेंटिमेंट्स में ट्विटर पे ट्वीट्स आते हैं, जैसे अगर किसी ने सपोज वो वाले ट्वीट्स इकट्ठे करे एंड यू आर जस्ट डूइंग देम क्लासिफिकेशन कर रहे हो उसके ऊपर कि ये दिस इज ए पॉजिटिव ट्वीट, दिस इज ए नेगेटिव ट्वीट, दिस इज ए न्यूट्रल ट्वीट, तो वो चीजें अगेन इट इज पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ओनली। सो मेडिकल डायग्नोसिस, तो बड़े सारे एग्जांपल हैं इसका, अगर आपके पास कुछ और एग्जांपल है तो आप इसमें ऐड कर लेना। रिग्रेशन प्रॉब्लम इज समथिंग इन विच वी वांट टू गिव ए सीरीज, तो मतलब हमारे पास कुछ फ्लोट
फ्लोट नंबर आएगा। अगर मैं सी प्रोग्रामिंग के फॉर्म में बात करूं, C++ में, तो फ्लोट नंबर आएगा, इंटीजर नहीं आएगा। ठीक है, तो पॉइंटों में आंसर आ रहा है, तो वो रिग्रेशन हो गया। उसमें हमें ये भी हो सकता है कि सपोज आजकल जैसे प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, तो एरिया वाइज वहाँ पे रेट होता है। ठीक है, कि आपकी लोकेलिटी क्या है, आपका घर कितना बड़ा है। सपोज चलो घर दोनों 3 BHK हैं, बट एक है अच्छे लोकेशन पे, एक है थोड़ा सा लो लेवल लोकेशन पे। ठीक है, जहाँ पे क्राइम रेट ज़्यादा है, तो डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन भी घर का रेट कम ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप इवन इफ यू आर डूइंग दिस हाउसिंग प्राइस प्रिडिक्शन, तो इसमें भी मल्टीपल चीज़ें हैं। आप सिर्फ 3 BHK देख के रेट नहीं बता सकते। हो सकता है कहीं पे 3 BHK 40 लाख का है, हो सकता है कहीं पे 2 करोड़ का है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेलिटी। ठीक है, सिटी भी, लोकेलिटी भी, आसपास कितनी ऑप्शंस हैं। आप होटल जा सकते हो, आप खाना बाहर अच्छी जगह पे खा सकते हो, रेस्टोरेंट वगैरह, स्कूल कॉलेज पास में है, तो जितनी अच्छी लोकेशन होगी उतना ज़्यादा रेट होगा। ऑल दोज काइंड ऑफ फीचर्स आर देयर। तो आप कोई भी प्रॉब्लम उठा के देख लो, उसमें आपके पास अच्छे फीचर्स, अच्छा डाटा सेट होना जरूरी है, देन ओनली यू कैन डू ए गुड लेवल ऑफ प्रिडिक्शन। Moving ahead now, let's discuss about unsupervised learning. तो unsupervised learning क्या होती है जी? Unsupervised learning is something जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, पर हमारे पास उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, उसका कोई टारगेट वैल्यू नहीं है। तो जैसे पीछे क्या था कि कुछ हमारे पास था, उसको हम एंड में 0 1 कुछ क्लासीफाई कर रहे थे, पर ये वाली चीज़ सपोज नहीं है मेरे पास। अब ये वाला कॉलम ही गायब हो गया, जो है सिर्फ इतना है, इसी के बेसिस पे काम करना है। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, वो आपस में इधर वाले डेटा सेट में ही कुछ रिलेशनशिप निकालेगा। सपोज वो यहाँ पे इतने एरिया में कोई रिलेशनशिप निकाल ले, सपोज वो इतने में कोई रिलेशनशिप निकाल ले, तो वो आपस में क्लस्टरिंग करे, जो मर्जी करे, लेकिन उसको अपने आप में ही कुछ ना कुछ रिलेशन निकालना पड़ेगा। दे डोंट हैव द ऑप्शन ऑफ द टारगेट रिस्पॉन्सेज, जिसके बेसिस पे वो अपना ट्रेनिंग कर पाए। So these type of algorithms determine the data pattern on its own and restructure the data into something else such as new features. तो यहाँ पे हमारे new features भी आ सकते हैं। ठीक है, uncorrelated values भी आ सकती हैं। Can anyone give me the example कि अगर मेरे पास iris data set है, iris data set में मेरे पास 4 कॉलम होते हैं। ठीक है, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ। तो अगर मुझे इन चारों को कन्वर्ट करके, ठीक है, एंड में दो चीजों में लेके आना है, 4 के बजाय 2 फीचर में लेके आना है, व्हाट काइंड ऑफ टेक्निक कैन आई यूज बेस्ड ऑन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग? विद एग्जांपल मुझे जल्दी से बताओ। अगर मैंने 4 फीचर्स को 2 में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? एंड आई वांट टू मेक श्योर कि मेरे वो दोनों अनकोरिलेटेड हैं आपस में, दोनों फीचर। Dimensionality reduction. एंड कैन यू गिव मी एग्जैक्ट एग्जांपल कि आप क्या लगा के डायमेंशनल रिडक्शन का कर लोगे? Hmm. Maybe SVD. एसवीडी और मे बी पीसीए, है ना? तो Yeah. पीसीए कैन बी वेरी हेल्पफुल इन दिस। ये तो पीसीए का जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, आई थिंक यू माइट हैव आल्सो डन इन द मशीन लर्निंग लैब आल्सो इन द लास्ट सेमेस्टर। तो पीसीए इज वेरी हेल्पफुल इन गेटिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स डन। अगर आपने 4 फीचर्स को 2 में लेके आना है, आपके नंबर ऑफ फीचर्स रिडक्शन करने का फायदा बहुत सारे होते हैं। कैन एनीवन टेल मी द व्हाट इज एडवांटेज ऑफ रिड्यूसिंग द फीचर्स? अगर मैंने नंबर ऑफ फीचर्स कम कर लिए, तो उसका क्या क्या फायदा हो सकता है? 2 4 फायदे बताओ क्विकली। एडवांटेजेस ऑफ फीचर रिडक्शन। ओवरफिटिंग कम हो सकती सर। ओवरफिटिंग कम हो जाएगी। ओवरफिटिंग पहले डिफाइन करो, क्या होती है? सर अगर मतलब ट्रेनिंग तो अच्छे से हो जाए बट टेस्ट केस जब करें तो अच्छे से परफॉर्म ना कर पाए। ठीक है, मतलब ट्रेनिंग एरर हमारा बहुत कम है पर टेस्टिंग एरर हाई है, तो वो ओवरफिटिंग है। ठीक है, तो ओवरफिटिंग कम कैसे करेंगे हम डायमेंशनल रिडक्शन करके? हाँ जी, हाउ डज डायमेंशनल रिडक्शन हेल्प इन ओवरफिटिंग? थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा करो। वी हैव टाइम, अभी है हमारे पास 8 10 मिनट, 7 मिनट है। हाँ जी, एनीवन हु कैन गिव मी द एग्जांपल विद रीजन? कोई और बताओ। चलो मान लेते हैं ओवरफिटिंग कम कर देगा डायमेंशनल रिडक्शन करके।
ऑब्वियसली कम तो करेगा ही ना ओवरफिटिंग, बिकॉज इफ यू हैव मोर फीचर्स, आप उसके ऊपर ओवर ट्रेनिंग कर रहे हो तो वो ओवरफिटिंग भी करेगा ओवर टाइम, ठीक है। वही आप उसको एग्जांपल ही कम दो, आप उसको डुप्लीकेट कॉलम्स मत दो, तो वो ओवरफिट नहीं कर पाएगा। इसके अलावा कोई और एग्जांपल बताओ कि आप इस डायमेंशनल रिडक्शन करके और क्या फायदे हो सकते हैं हमें। कैन इट हेल्प अस इन रिड्यूसिंग द डेटा सेट साइज? ऑब्वियसली, है ना। अगर मेरे पास सपोज कुछ इमेजेस हैं एंड दैट इमेज साइज इज लेट्स से 1000 by 1000, तो इनिशियली मेरे पास 1 मिलियन वैल्यूज की एक इमेज है एंड आई हैव लेट्स से 20 इमेजेस, तो 20 मिलियन वैल्यूज होगी मेरे पास। बट इफ आई कैन कन्वर्ट दोज 1000 वैल्यूज और मे बी 1 मिलियन वैल्यूज इनटू 1000, तो मैंने डायमेंशनल रिडक्शन करके 1 मिलियन को 1000 कर दिया, तो 20 मिलियन की बजाय अब सिर्फ 20,000 वैल्यूज के ऊपर काम करना पड़ेगा, तो हमारा मॉडल भी जल्दी ट्रेन हो जाएगा, टाइम सेव होगा। देर आर मल्टीपल एडवांटेजेस ऑफ डूइंग द डायमेंशनल रिडक्शन। तो ये सब हमारा अनसुपरवाइज में आता है। आई विल गो विद द नेक्स्ट स्लाइड। तो these are the different examples, in fact different problems that are part of unsupervised learning। तो clustering हो गया, learning associations हो गया, dimensionality reduction हो गया। Can anyone tell me the example of learning associations? क्या होते हैं ये? What do we understand by learning associations? आप सबने ये पढ़ा हुआ है, it's kind of a revision only। सर रूल बेस्ड मशीन लर्निंग जो होती है। एसोसिएशन रूल बेस्ड मशीन लर्निंग होती है, इसका एग्जांपल बताओ, ये कहाँ पे यूज होता है? What is the use case of this problem? सर जैसे आप किसी मार्केट में जाते हैं और वो सजेशन देने लग पड़ते हैं कि आप ये भी ले लो ये भी ले लो, उस टाइप। सो लेट्स से अगर आप कुछ अमेजोन पे भी सर्च कर रहे हो, तो बहुत बार क्या होता है, हमारे उस आइटम के नीचे अगर हम जाएं तो वहां पे लिखा आता है पीपल ऑल्सो बॉट दीज 2-3 थिंग्स along with this first thing जो आप देख रहे हो। तो वो जो सजेशंस आ रहे हैं वो लर्निंग एसोसिएशन है, वो एसोसिएशन रूल माइनिंग हो रखी है, उनके आपस में एसोसिएशंस बने हुए हैं कि अगर ये चीज बिक रही है तो इसके साथ ये सेकंड चीज भी बिक सकती है, ठीक है। तो ऑल दीज आर थ्री एग्जांपल, दीज आर थ्री डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ अनसुपरवाइज्ड। अब इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए आई विल गो टू डायरेक्टली सिंपल थिंग्स। तो क्लस्टरिंग में क्या हो रहा है, क्लस्टरिंग में वी आर एक्चुअली इट इज़ अ टास्क ऑफ डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू नंबर ऑफ ग्रुप्स सो दैट डेटा पॉइंट्स इन द सेम ग्रुप आर मोर सिमिलर। तो आप सिमिलरिटी के बेसिस पे जिनका आपस में डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस मैट्रिक लगा लो, तो उनकी क्लस्टरिंग हो जाती है, ग्रुप्स बन जाते हैं, सेग्रीगेशन हो जाती है। एग्जाम्पल्स आर दीज थिंग्स। सपोज यू वांट टू डू डॉक्यूमेंट आर्टिकल क्लस्टरिंग, तो ये सब भी कर सकते हो, सिटी प्लानिंग में काम आ जाएगा, स्पीच रिकॉग्निशन हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, स्पीच रिकॉग्निशन क्लस्टरिंग का एग्जाम्पल कैसे है? कैन एनीवन टेल मी द रीजन बिहाइंड putting this speech recognition under the clustering example? हाँ जी, सर जल्दी मे बी बताओ। सर मे बी ऐसा कि जो सेम सेंटिमेंट के वर्ड्स हैं उनको एक क्लस्टर में कर दिया, सेम लैंग्वेज के वर्ड्स को एक क्लस्टर में कर दिया। हाँ, तो इसके मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, जो आपने बोला वो है कि आपने सेम सेंटिमेंट वाले या सेम लैंग्वेज वाले कर दिए क्लस्टर में। या फिर अगर मैं इसका और स्पेसिफिक कोई एग्जांपल ढूंढूं, तो एक ये भी कर सकते हैं, मेल वर्सेस फीमेल, है ना। तो मेल कोई भी चल रही है ऑडियो, तो उसमें मेल और फीमेल की लैंग्वेज को अलग अलग करना है। सपोज वी वांट टू मेक द क्लस्टर्स आउट ऑफ इट, कि मेल वाली लैंग्वेज अलग हो जाए, उसकी वॉल्यूम, उसकी जो भी आवाज़ है फीमेल वाली वो अलग हो जाए, ठीक है। तो ये दोनों चीजें अलग करनी है, तो ये सब क्लस्टरिंग का काम हो सकता है। एंड इन फैक्ट इससे भी एक मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग सा एप्लीकेशन याद आया, इफ समवन वांट टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट। स्पीच रिकॉग्निशन में प्रोजेक्ट ये बन सकता है दैट फॉर एग्जांपल कोई मूवी है, तो उसमें मूवी में हीरो ने कितने डायलॉग बोले हैं, एक्ट्रेस ने कितने बोले हैं, ठीक है, एक्टर और एक्ट्रेस के आपस में कितना ऑन स्क्रीन टाइम मिला उनको डायलॉग मारने का, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन दैट, is it justified that the male actor is getting more money than the female actor? ये पुराना है थोड़ा, लेकिन it is still relevant एग्जाम्पल, और इस पे अच्छा खासा काम किया जा सकता है, बिकॉज इसमें आपको वीडियो प्रोसेसिंग भी करना पड़ेगा, ऑडियो प्रोसेसिंग भी करना पड़ेगा, फिर उसका टेक्स्ट जनरेशन भी करना पड़ेगा, देन यू हैव टू कंपेयर देम आल्सो,
उसका आप सेंटीमेंट भी देखोगे कि वो किस सीन में बात हो रही है। तो देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स टू दिस प्रॉब्लम। तो स्पीच रिकॉग्निशन में ही 10-15 डिफरेंट एग्जाम्पल बन सकते हैं, सिमिलरली बाकियों में भी। तो आप अपने आप बाकियों पे भी दिमाग लगाओ और थोड़ा सा इनके एग्जाम्पल्स के बारे में सोचो प्रैक्टिकली। सो इट इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज टू जनरेट डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ कैपस्टोन। सो लर्निंग एसोसिएशंस भी यही होते हैं दैट यू आर ट्राइंग टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट डाटा विच इज अवेलेबल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है इट इज एम्प्लॉयड इन मार्केट बास्केट एनालिसिस, जो आपने एग्जाम्पल भी दिया था एंड वी डिस्कस दैट। वेब यूजेज माइनिंग, कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन, मेडिकल डायग्नोसिस, प्रोटीन सीक्वेंसिंग, कैटलॉग डिजाइन, तो ये सब में learning association use होता है because we don't directly have the labels for this, but then we want to find the relationship between those things, so हम उसका distance के basis पे check कर लेते हैं कौन कितना similar है। learning association के ये 3 algorithm हैं। a priori आपने पढ़ा हुआ है, fp growth algorithm, eclat, तो ये सब मल्टीपल एल्गोरिथम्स हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे नाम डाल दिए। डायमेंशनलिटी रिडक्शन के 2 स्लाइड है मेरे पास। सो इसमें बस इतने बताना था कि एक तो हम कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी को हैंडल करने के लिए डायमेंशनलिटी रिडक्शन करते हैं, बिकॉज व्हेन डाटा सेट इज वेरी लार्ज इट टेक्स मोर रिसोर्सेज, इट मे टेक्स मोर टाइम। तो ये सब हमें हैंडल करना पड़ सकता है। इट इज़ वेरी हेल्पफुल अगर हम यहाँ पे हमारा डायमेंशनलिटी रिडक्शन कर पाएँ। ठीक है, सो यू हैव स्टडीड पीसीए, एसवीडी, एलडीए, ये आपने पढ़ा हुआ है पिछले सेमेस्टर में इन मशीन लर्निंग। सो इन दिस सेमेस्टर वी विल आल्सो बी डिस्कसिंग टीसनी एंड यू मैप इन डिटेल, दिस इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ठीक है जी, और बाकी की बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए वी विल डायरेक्टली डिस्कस दीज फीचर प्रोजेक्शन वाला डायमेंशनल रिडक्शन मेथड्स एंड वी विल आल्सो इम्प्लीमेंट पीसी, एसवीडी, ये सब हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे इन लैब। So this is the last slide. Deep learning is one of the keyword in your first unit. So I have covered only the names as of now. इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लेंगे अगली क्लास में 5-10 मिनट। RNN, CNN, attention based models. So these are the names of the different models that we can or we will use for deep learning with NLP. ठीक है, recurrent neural network, CNN, तो ये सब की डिटेल में जाएंगे हम अगली क्लास में। We will start from this topic. So that's all for today. I'm leaving the session now. Thank you.